Your lies, Mom. Sinabi na sa akin ni Karina ang lahat na you ordered her na manggulo sa fan meet namin. Kinuha ko lang yun dahil hindi ko kayang tanggapin ang bunga ng pagkakamali ng daddy mo! What do you mean? Kapatid mo, si Jenny. Ito ang dahilan kung bakit ayoko maging bigay anak. Kasi hindi ko kaya, hindi ko narinig yung boses mo pag kumapanta ka. Hindi po mangyayari yun. Pangako po yan. Habang buhay niyo pong maririnig yung boses. Why did you betray us, Dad? Di pa ba kami sapat nun? Bakit si Jenny pa? Ang unfair kay Jenny na hindi niya malalaman yung totoo. Ano ba mas importante? Yung nararamdaman ni Jenny or yung mga possibilities na pwedeng mawala sa'yo pag nalaman ni Jenny yung totoo? Jenny, there's something I have to tell you. Ano yun, Megan? I just wanna apologize. Sa inasta ko last night. I was not feeling well. Yun lang pala. Kala ko naman kung ano. Okay lang yun. Naintindihan ko naman eh. Megan? Can I speak to you? Excuse us. Come here. Excuse us. Thank you. Malaking pagkakamali kapag sinabi mo kay Jenny. At GoDaddy, we know your website is the center of your online business. Help protect it from online threats with website security. Ano ba hindi mo naintindihan? Akala ko, kapag sinabi ko sa iyo ang totoo, you'd go back to your senses. Ano bang gusto mong sabihin ko? I understand. Naguguluhan ka, nasasaktan ka, galit. But I want you to understand na lahat ng ginawa ko at ginagawa ko ay para protektahan ka. Ako ang malinaw mong kakampi dito. So please stick with me. I know you're grown up now. I trust whatever decision you're going to take. Kung sinong pipiliin mo. Ako, ang mami mo for 20 years. O yung kapatid mo na pwedeng agawin lahat ng meron ka. May pag-asa ba akong mapagbigyan sa ng taong dumaraan? Ikaw ay aking natagpuan. Ano, kamusta? I think we have your career single for your new album. You think so? Yes, definitely. It makes your whole album complete eh. Parang ito na yung i-release mo single. Mukhang kailangan kong pasalamatan na treat ng dinner yung inspiration mo. Yung thank you, ayos lang ha. Pero yung mag-dinner kayong dalawa lang, hindi pwede. Wow, na para bang exclusive na sila. O ka ba? Walang ganun. But you know, I wonder what she's up to now. Nakita ko kanina. Parang may pinag-usapan kayo ni Miss Dara. May problema ba? Megan, pwede kang huminga sa akin. Sisters tayo, di ba? Pwede kang magsabi sa akin. Naiingit ako sa ni Jenny. Actually, I am jealous of you. Sorry. Hindi ko maintindihan, Megan. My mom and I, hindi kami katulad niya. We don't have that kind of relationship na meron ka with your family. Wala rin akong mga kaibigan katulad nila Paste, nila Yuna, Nancy. Hindi rin ako likeable sa mga fans.
Kaya inggit na inggit ako sa'yo, Jenny. At lahat ng yon, kaya kong tanggapin. Kaya kong palagpasin. Pero hindi lang pala hanggang doon. Hindi lang ganun kasimple. Mas malalim pa palang dahilan. Hindi ko magets, Megan. Hindi mo naman kailangan mainggit sa akin. Kasi alam mo, meron kang mga bagay sa buhay mo na wala ako. Jenny, Megan. Group chat na. Come on, guys. Sige po. Come on, girls. Boss. Para, Jenny. Hindi, yung mga kandila. Dito na lang. Bali yung mga kandila po sana, huwag po masyadong mataas para madali po ngayon. Okay, sige. Kasi mga face... Sige, kayo rin. Sige. Tandaan sa TV. Pwede mo siguro natin konti dito. Uy, sa idol na ito. Idol! Sa idol. Nate, Uy, sa idol. ano ginagawa mo dito? Good morning. Paano mo nalaman? Salamat. Salamat, ha? Ay, hindi ka muna namin maaasikaso at marami pang aayusin, lilinis. Yun na po isipin yun. Actually, tutulong sana si Nancy at Yuna. Pero may prior commitment ate. So ako na lang. Sure ka ba? Uy, sakto bro. May aakyat pa sila Kuya Lolong ng table. Ikaw na lang tumulong. Dapat na pag napunta dito, natulog din. Dapat nakaubad din para hindi pagpawisan yung damit, di ba? Oo nga. Kailangan pa pa yun. Oo, tara na. Saan mo yung damit mo? Babasahin na pawis. Wow! Kaya nga ako. Tayo. Tara. Gusto ko yan. Lahat ng yan. Kung sino kailangan natin. Dito. 1, 2. Ay, isa pa. Waki. Ay. Asa mo sa akin. Send ko sa inyo. Uy, personal consumption lang to ha. Bawal ko i-post. Privacy nila ha. O, dali na. Send ko. Ipapaprint ko yan, ha? Kaya kailangan ano yan. Pwede ka naman merienda na tayo muna. Dito. Ayun. May merienda rito. Robot pala ako. O, kain na kayo, ha? Tara. Ito ay masarap to. Ayan. Gutom na ako. Ay tapos din. Ay. Salamat, Nate, ha. Pasubo ka patuloy. Don't worry about it. Alam ko mahirap yan. Pagsabay yung career at family problems. Oo. Sarap, di ba? Mahirap talaga magtrabaho kapag meron kang inaalala sa bahay. Siyempre, lalaban pa rin, di ba? Yun ngang pagngiti sa mga fans. Simple lang yun, pero mahirap gawin pag nahihirapan yung puso. Relatable. Bakit? Nahirapan din ba yung puso mo? Basta, I'll always be here for you, Jenny. At maghihintay lang ako. Ready ka na. Naantay sa ano? Pag ready ka nang i-share ulit natin yung stage. Ay, dalawa. Namiss ko kaya yun. I trust whatever decision you're going to take. Kung sinong pipiliin mo. Ako, ang mami mo, for 20 years, o yung kapatid mo na pwedeng agawin lahat ng meron ka.
Nakakadalawang session na tayo dito. Bali, 8 to 18 sessions pa sa hyperbaric oxygen therapy para mag-improve yung pandinig mo. Sige po, Doc. Gano'n ba katagal bago bumalik sa normal? Improvement na lang talaga ang hinahabol natin dito. Good thing may hearing aid si Sir, kaya nakakarinig na siya. Pero may chance pa rin na tuluyang mawala yung pandinig niya, kaya aalagaan pa rin natin. Opo, sinusunod ko naman po lahat ng inuutos ninyo. Hindi na po ako umiinom ng alak. Kahit po kape, hindi na ako umiinom. That's good. Ituloy-tuloy lang natin yung therapy mo. Sige po, Doc. Gawin ho natin ang lahat para mapabilis ho yung paggaling ng pandinig ko. Dapat lang. Dapat gumaling ka talaga. Ang dami-dami pang kakantahin ni Jenny. Padaan po! Buti umabot! Sakto kayo, Lita. Bigis ka. Agad-agad kita yun na Tita. Please welcome Yumi! Sa bawat sandaling natutulala, pagkakit ko, ikaw nasa isip ko, hanggang panaginip, ikaw ang katabi. Nararamdaman, oo na, ikaw ang dahilan. Kahit hindi ko ay di maiwasan. Oo na, ikaw ang dahilan. Di maitago ang nararamdaman. Oo na, ikaw. Lola, buti nakita kita. Ano ginagawa mo dito? Ang lakas ng loob mo paano magpakita sa akin. Nang dahil sa'yo, nagkasira kami ni Megan. Dara, nasira rin naman ako. Wala na akong masulungan kasi galit na sa akin ng mga tao. Pero tinanggap mo. Tinanggap ko man o hindi. Ikaw nakaisip nito eh. Sige ka, pag hindi mo ako tinulungan, mapipilitan ako na ipagkalat na ikaw yung dahilan kung bakit ko ginawa yung gulo. Kaya tuloy na pahamak yung asawa ni Vinci Sikat. Namaan na nga. Ay! Basta! Basta! Tulungan niyo! Basta! Dito ho! Bigla na lang po siya.
Okay na siguro yan. Sa ngayon, salamat. Makakatulong to. Huwag ka lang sabihin sa akin kung saan ka magtatago. Para kung may magtanong sa akin, wala talaga akong alam. Ang importante, makaalis ka ng bansa. Para hindi ka nila mahanap. At huwag mo na akong kontakin. Sige, sigurado ko sa'yo, wala ka lang maririnig mula sa akin. Basta Dara, siguraduhin mo lang na magde-deposit ka sa account ko buwan-buwan. What? You're extorting money from me? Hindi naman sa ganun, Dara. Pero isipin mo naman, ang gastos kayo magtago sa ibang bansa. Saka, pag naubusan ako ng pera, madali ako matiktikan ng pulis. Ikaw din. Tandaan mo, Dara. May nasaktan dahil doon sa gulo. Napakana mo. Peri. Sino yun? Sino yun? Sino? Bakit? Ay, ano to? Very sikat ang pangalan niya, diba? Tatay ng leader ng Yumi, si Jenny. Huwag mo nang idiin pa. Ang importante, ligtas si Perry. Wala siyang permanent injury. Kaya pwede kalimutan na natin lahat na nangyari ito. At makakaasa ka that I'll be taking care of you. Salamat. Salamat talaga, Dara. Kilala mo naman ako, Dara eh. Ang tagal mo na akong fan. Napaka-loyal ko sa'yo. Promise, walang makakaalam na sino man na may kinalaman ka doon sa nangyari kay Perry. Cute naman! So cute ha, teddy bear may nagbigay. Oh, nag-effort oh, ganda. I love it. Ganda oh. Gift sa'yo. So nice. Yes? Ay, kanina nandyan sila. Gusto mo bang ipatawag ko? Hindi na po. Siguro kumain lang po sila. Babalikan din po nila ako. Okay. Wala pong banda. Ay, salamat. Dumating na yung doktor niya. Tinignan na nga siya. Pero kanina pa yun. Baka may nakita kasi mas malalang sakit. Kaya siguro hindi pa ako binabalikan. Tita, huwag tayo mag-isip ng ganyan. Dapat positive lang tayo, tita. Think positive, tita ng G. Bumalik ka na dun sa event. Ayos na ako rito. Baka mamaya hinahanap ka na ni Jenny ron. Sige na. Ayun natin po, iniisip ko eh. Huwag mong sasabihin sa kanya yung nangyari, ha? Tita, bakit hindi ko magawa yun? Kasi tita, baka mag-isip yun eh. Lalo na po pag nakitang wala kayo doon. Baka isipin mo yung mangyari. Ayoko lang kasi na ma-disguise siya. Mag-isip lang kung ano, hindi makapag-perform. Sasabihin ko sa kanya, pag may alam na ako. Sige. Salamat at salamat. Tita, Amen. sige, wala na ako. Dali na. Tagal yung ulo. Tahimik mo ata. Wala, pagod lang. Ito talaga, ipapaayos ko to. Araw ka ng ganyan, Meg. Kahit sa bahay. Hindi na yan basta lang pagod. Pansin ko rin na. Problema ba? Gusto mo, lumabas tayo. Bonding. Right? Pwede. Ano? Oh, bigyan ako. Ano, G? G? Fun time, Yumi fun time. Wow. Ano, G?
Okay, sure. Ano? Yes, perfect. Pero, wait lang. Napin ko muna si Nanay at Papsi. Bakit? Asan pa sila? Hindi ko rin nga alam eh, kasi di ko na sila nakita pagtapos ng show. Baka umuwi na. Hindi yun uuwi nang hindi nagpapakita o nagte-text man lang sa akin. Sure ako nandito lang yun. Sige, wait lang ah. Go, boss. Ito lang kami. Mukhang kailangan natin ilipat si Trio for sa ICU. Okay. Doc? Doc? Ay, sige. Wait lang. Mami Chi, hello. Kumusta ho si Perry? Si Manong Perry, stable naman yung vital signs niya. Pero hindi pa siya gumigising. Kumababa uli ulo niya. Hindi ho. Hindi, nasa loob ko siya kaagad eh. Pero, Doc, ayos na siya eh. Bakit siya hinimatay? Kasi mukha siyang head trauma case ulit. Kaya nandyan yung vertigo niya. Tsaka nawawala yung malay ulit eh. Sige, ganito na lang tayo. Reassessment tayo ulit. Okay? Major reassessment. Tapos, we'll monitor him. Kasi concern ko lang, dapat gising na siya ngayon eh. Doc? Ay, wait lang. Excuse me. Ate, okay lang po kayo? Natapilok na ako kanina. Mukhang na-sprain ako. Masakit po ba dito? Kailangan niyo po yung tulong? Nakatawag na ako ng medic. Hindi po. I-relaxin lang po. Ayun po ma'am, yan. medyo natagalan. May hinatid po kasi kami sa ospital. Tatay daw po ng member ng unit. May dinala kayo sa ospital, kuya? Hala, baka tatay niyo po yata, ma'am. Si Papsi po? Dinala niyo sa ospital. Ano po nangyari kay Papsi? Nasaan siya, kuya? Perry, pwede pong patawag si Doc? Tatawagin ko lang po ang doktor. Salamat po. Ay, uy, salamat naman. Kumusta? Anong nararamdaman mo? Doc? Hello. Kumusta na po? Ayan po, gising na. Gising na? Mang Perry, kumusta na? Okay. Mang Perry, check lang tayo, okay? Check up lang. Tingin lang. Taas. Okay, good. Look at the light. Let's take muna. Okay. One more. Okay. May problema ba, Perry? Everything okay naman? Follow. May problema ba? Okay lang ba lahat? Perry, may tinatanong si Doc. Narinig mo? Boss, bakit? Luna, si Papsi daw nahimatay. Dinala sa ospital. Kailangan ko siyang puntahan ngayon. Uy, sasama kami. Tara na, tara. Wait, paano yung lakad natin? I guess we have to reschedule. Mas kailangan tayo ni Jenny, Megan. Oh, tara na. Sorry, Megan, na nasira yung plano natin. Okay lang. Mas importante ka naman. I mean, yung family emergency mo. Salamat sa pag-intindi. Ano, tara na? Tara na. Let's go. Dennis, si Jay yung sasama sa inyo, ha? Okay po. Tara na. Thank you, Miss Anya. Sorry, hindi ako makakasama sa inyo. Pinapawi kasi ako ni Lola eh. Sorry, Jenny ah. Okay lang. Sana okay lang si Ma'am Amelia. Una na kami, ha? Get home safe, ha? Megan. Ilan ba ito, Perry? 3? Okay. Everything is okay naman for now. Same pa rin, concussion protocol for Mang Perry. For the next few hours, maybe a day or two pa. Tapos, please tell him not to sleep first. Okay? Opo. Sige. Ingat Mang Perry, okay? Salamat po. Mabuti ayos ka lang. Nag-alala talaga ako. Wala ka ibang nararamdaman, ha? Ako ni Karina. Karina? Yeah, but it was all good. Nakausap ko siya. And she's leaving the country. Hindi na daw tayo ablahin ni Karina. What a relief.
Buti naman at naayos mo, ha? Ikaw, next time, kung gusto mong gumawa ng kahit anong bagay para pasakitan o ipahiya si Minchi, make sure walang ibang madadamay. Because these things have big consequences na pwede mong pagbayaran habang buhay. Do you understand? Boss, huwag ka mag-alala. Malapit na tayo sa ospital. Nakikita mo na si Bossing Perry. Go, boss. Ingat ka, ha? Ay! Uy, sigat na tayo, Insan! Hindi na tayo makadaan. Ay, Nancy, mapapagalitan na naman ako ni Miss Anya nito. Uy! Kuya, sige na. Huwag na tayong tumuloy. Atras mo na. Diba, masalikod pa po sila eh. Unti-unti natin para wala pong masaktan. Pero yung tatay ko. Sorry, Jenny. Hindi talaga tayo pwedeng tumuloy. Ang daming tao. Safety mo ang nakasalalay dito. Kaya tara na, kuya. Let's go na. Tama kayo. Bukas na yung mga mata ko tungkol kay Jenny. Inagaw niya lahat sa akin. Hindi ko siya kaibigan. No one will ever know na si Jenny ay isang halari. I have great news for everybody. You're all nominated sa Pinoy Pop Himig Awards. No, we're not. Yes! Congratulations! Oo na, ikaw ang dahilan. Maiwasan. Wala akong marinig! Wala na akong marinig! हे भगवान, आज तो कितना भयानक तूफान आया है। यदि इसी प्रकार बारिश होती रही तो मेरी तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। प्रकाश एक बहुत ही सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था। वो अपने बूढ़े माता पिता के साथ इसी घर में रहता था। पूरी रात जोर जोर से बारिश और तूफान होता रहता है। पिताजी, मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ। अभी जल्दी ही लौटकर वापस आ जाऊंगा। इतना बोलकर प्रकाश वहाँ से खेतों की ओर निकल जाता है। प्रकाश चलते चलते फिर अपने खेतों के पास पहुँच ही जाता है और वो क्या देखता है कि उसकी अपनी सारी फसल जो थी वो नष्ट हो चुकी है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगा? मेरी तो सारी फसल नष्ट हो चुकी है। अनाज कहाँ से लाऊंगा और अपने बूढ़े माता पिता को क्या खिलाऊंगा? बेचारा प्रकाश वहाँ पेड़ के नीचे बैठकर बहुत देर तक
रोता रहता है। हे भगवान, मेरे परिवार का सहारा बस ये खेत ही था, आज वो भी नष्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा? अब तो यहाँ रहकर मैं अपने माता पिता का पेट नहीं भर पाऊँगा। मैं ऐसा करता हूँ, अपने बूढ़े माता पिता को साथ लेकर कहीं दूसरे गांव में चला जाता हूँ। इतना कहकर प्रकाश वहाँ से अपने घर की तरफ चल देता है। अरे, ये आवाज़ किसकी है? कौन रो रहा है इधर? मुझे तो लगता है कोई मुसीबत में फंसा हुआ है। एक बार ज़रा देखूं तो सही, कौन है ये? फिर प्रकाश उसी ओर चलने लगता है जिस तरफ से वो आवाज़ आ रही थी, और प्रकाश देखता है लोमड़ी अपने घायल बच्चों को देख देख कर रो रही है, जो बच्चे बिल्कुल अभी छोटे थे, चलने के लायक भी ना थे। अरे लोमड़ी, तुम क्यों रो रही हो? और तुम्हारे इन बच्चों को क्या हो गया है? अरे भैया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इस तूफान ने तो मेरा सारा घर ही उजाड़ दिया। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे बच्चों ने जन्म लिया था, अभी ये चलने के लायक भी नहीं है। तूफान ने हमारा ये हाल कर दिया। अरे लोमड़ी, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे को दवाई लगा देता हूँ, जिससे जख्म बहुत जल्दी भर जाएंगे, और मैं तुम्हारा ये घर भी थोड़ा ठीक कर देता हूँ। प्रकाश की ये बात सुनकर लोमड़ी की थोड़ी जान में जान आई। प्रकाश जल्दी से जाता है और कुछ दवाई की पत्तियाँ तोड़कर लाता है, और जल्दी ही उन घायल बच्चों के घावों पर लगा देता है। और फिर वो जल्दी से वो गिरा हुआ पेड़ जो था जिसमें वो रह रहे थे, उसे सही जगह पर, ये देखकर लोमड़ी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हे दयालु इंसान, तूने मेरे परिवार को मरने से बचा लिया। तुम बहुत अच्छे आदमी हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा लोमड़ी, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको भैया, तुमने मुझे मुसीबत से निकाला, लेकिन मैं देख रही हूँ तुम्हारे चेहरे पे बहुत उदासी है। क्या कारण है? तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे मैं क्या ही बताऊँ, जिस जालिम तूफान ने तुम्हें कष्ट दिया है, उसी जालिम तूफान ने मेरा भी खेत जो था वो सारा तबाह कर दिया है, और उसी फसल से मेरी सारी उम्मीदें थी। अब वो फसल भी सारी नष्ट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा? खाना कहाँ से लाऊंगा और अपने बूढ़े माता पिता को क्या खिलाऊंगा? मेरे पास खेती के सिवा दूसरा कोई साधन भी नहीं है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? अरे मेरे भाई, आप दुखी मत हो। आपने इतनी हमारी मदद की है तो मैं भी आपकी एक मदद कर देती हूँ। मैं तुम्हें एक खजाने का रास्ता बताती हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन वो खजाना है कहाँ? वो खजाना तुम्हें नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलेगा। याद रहे, वो खजाना देखकर तुम्हें ज्यादा लालची नहीं बनना। अगर तुम्हारे मन में ज्यादा लालच आई तो वो खजाना तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात को याद रखूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर प्रकाश खजाने की खोज में निकल पड़ता है। प्रकाश चलते चलते बहुत ज्यादा थक गया था और उसे भूख भी बहुत लगी हुई थी। अरे मैं तो चलते चलते बहुत ज्यादा थक गया हूँ और मुझे भूख भी बहुत लगी है। यहाँ तो आसपास कुछ भी नजर नहीं आता। मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ आसपास ही खाने को ढूंढता हूँ, शायद कुछ खाने के लिए मिल जाए। इतना सोचकर प्रकाश खाना ढूंढने लगता है। काफी देर इधर उधर भटकने के बाद उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है, जिसमें बहुत सारे आम लगे हुए थे। अरे इस पेड़ में तो कितने सारे आम लगे हुए हैं, मैं जल्दी से कुछ आम तोड़ लेता हूँ। और प्रकाश जैसे ही उस आम की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो पेड़ के सारे आम गायब हो जाते हैं। ये देखकर प्रकाश बहुत ही हैरान हो जाता है।
अरे ये क्या हुआ? अचानक से वो सारे आम कहाँ गायब हो गए? बेटा, तुम इस पेड़ के आम ऐसे नहीं खा पाओगे। अरे ये किसकी आवाज है? कौन है? और आसपास तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई देता, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? बेटा, मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। मैं एक पेड़ हूँ, लेकिन क्यों पेड़? मैं तुम्हारे फल क्यों नहीं खा सकता? बेटा, इंसानों ने हमें बहुत सारे कष्ट दिए हैं। हमने इंसानों के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्हें आपने स्वादिष्ट फल खिलाए और हम खुद धूप और बारिश में तकलीफ उठाते रहे, लेकिन तुम इंसानों को अपनी छाया में बिठाया। लेकिन बदले में तुम इंसानों ने हमारे लिए क्या किया? तुमने बारी बारी सारे पेड़ काट दिए हैं, जिसकी वजह से आज इतनी कड़कती धूप पड़ रही है। इसका कारण सिर्फ तुम ही हो, और इस गर्मी की वजह से हमें भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। इसकी वजह से हमारी तने भी सूख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। यदि इस विनाश को रोकना है, यदि कोई व्यक्ति एक पेड़ किसी मजबूरी के कारण काटता है, तो उसके बदले कम से कम उसे 3 पेड़ लगाने होंगे, तभी हम इस पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन पेड़, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? बेटा, मैं तो किसी के पास जाकर ये बात नहीं बता सकता, लेकिन ईश्वर ने तो तुम्हें पैर दिए हैं। तुम हर एक व्यक्ति तक ये संदेश पहुँचाओ। ऐसा करने के लिए क्या तुम तैयार हो? तभी मैं तुम्हें फल खिला सकता हूँ। हाँ पेड़, ठीक है, मैं आपके इस संदेश को हर आदमी के पास पहुँचाऊंगा। प्रकाश की ये बात सुनकर पेड़ बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से अपने कुछ फल नीचे गिरा देता है, और प्रकाश उन फलों को उठाकर तुरंत खाने लगता है। फलों को खाकर प्रकाश आगे जाने लगता है। अरे बाप रे बाप, इतनी जोर की धूप पड़ रही है और इस धूप में चलना तो बहुत मुश्किल हो रहा है, और मुझे बहुत सारी प्यास भी लगी है, लेकिन नदी तो पास में ही है। चलो थोड़ा सा पानी ही पी लेता हूँ। पानी पीकर जैसे तो सारी थकान दूर हो जाती है। अरे पानी के भीतर ये क्या है जो इतना चमक रहा है? और प्रकाश अपना हाथ उस पानी में डालता है और जल्दी ही उस चमकते सिक्के को बाहर निकाल। अरे ये तो सोना है, लेकिन इस नदी के भीतर ये सोना आया कहाँ से? वो नदी उसी नीलगिरी पहाड़ी से होकर गुजरती थी, जिसकी वजह से कभी कभी सोना उस नदी में बहकर आ जाता था। इसका मतलब ये नदी नीलगिरी पहाड़ी से होकर आती है। चलो जल्दी से मैं गुफा के पास जाता हूँ। प्रकाश चलते चलते जल्दी ही नीलगिरी पहाड़ी के पास पहुंच जाता है। मैं इस गुफा के बीच तो आ गया, लेकिन खजाने का कुछ पता ही नहीं है कहाँ पर होगा। अरे ये क्या, एक पत्थर के नीचे से इतना सारा पानी कैसे आ रहा है? कहीं इस पत्थर के पीछे ही वो खजाना तो नहीं छुपा हुआ है। चलो इस पत्थर को ही हटा कर देखता हूँ। प्रकाश जैसे इस पत्थर को हाथ लगाता है, वो पत्थर अपने आप दूर खिसक जाता है। अरे ये क्या, ये पत्थर मेरे छूते ही इतना दूर कैसे हो गया? और देखता है गुफा की हर तरफ सोना ही सोना पड़ा हुआ है। अरे बाप रे बाप, यहाँ पर इतना सारा खजाना पड़ा हुआ है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? क्या ये हकीकत है? अरे नहीं नहीं, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत ही में ही सोना है। चलो मैं अपनी जरूरत के हिसाब से ही सोना ले लेता हूँ। और प्रकाश एक पोटली भरकर सोना ले लेता है। आहा, इतना सोना मेरे जीवन के लिए बहुत काफी है। इतना कहकर प्रकाश
सोने की पोटली अपने सिर पर रखकर वहां से निकल पड़ता है। रुक जाओ, कौन हो तुम और इस पोटली में क्या लेकर जा रहे हो? क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहा? इस पोटली के भीतर क्या छुपा के रखा है तुमने? अरे सरदार, ये ऐसे आदमी नहीं बताएगा, हम इसकी पोटली छीनकर खुद ही देख लेते हैं कि इसकी पोटली के भीतर क्या रखा है। हाँ हाँ जोरावर सिंह, तुम जल्दी से इसकी पोटली छीन कर ले आओ। बेचारा प्रकाश डर जाता है और उस पोटली को उस डाकू को दे देता है। अरे वाह, इसमें तो बहुत सारा सोना है। अरे युवक, तुम्हें ये सोना कहाँ से मिला? जल्दी से बताओ वरना मारे जाओगे। भाई, ये सोना तो मुझे इसी गुफा से ही मिला है। वहाँ पर तो ढेर सारा सोना पड़ा है। मैंने अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा ही सोना लिया है। क्या कहा? इतना सारा सोना? और जिस सोने को हम वर्षों से ढूंढ रहे हैं, और वो सोना तुम्हें मिल गया? हाँ हाँ भाई, वो सोना मुझे ही मिला है। और चल जल्दी जल्दी, और वो बता मुझे सोना कहाँ पर है, नहीं तो तुम्हें मारकर इसी गुफा में दफना देंगे। ठीक है भाई, अब मुझे कुछ मत करना, मैं आपको उसी गुफा के अंदर ले चलता हूँ। और जल्दी से जाकर उस बड़े पत्थर के पास रुक जाता है। क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों रुक गए? यहाँ पर तो कोई सोना नजर नहीं आ रहा। अरे भाई, इस पत्थर के पीछे ही तो वो खजाना छुपा हुआ है। क्या इस पत्थर के पीछे वो खजाना है? लेकिन तू इस पत्थर के पीछे गया कैसे, और तुमने अकेले ने ये रास्ते से हटाया कैसे? अरे दुष्ट, वो मुझे मूर्ख बना रहा है कि तूने अकेले ही नहीं ये इतना बड़ा पत्थर हटा लिया, जबकि हम सारे लोग मिलकर इस पत्थर को दिन भर नहीं हिला सके, और तूने इस पत्थर को अकेले ही हटा दिया। नहीं भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सचमुच अकेले ही इस पत्थर को हटाया था और इसके अंदर मैं गया था। यदि ऐसी ही बात है तो तू मेरे सामने ही इस पत्थर को हटा, जरा मैं भी तो देखूं कि तूने अकेले ही इतने बड़े पत्थर को कैसे हटा दिया। ठीक है भाई, मैं अभी इस पत्थर को हटाता हूँ। इतना कहकर प्रकाश जैसे ही उस पत्थर को छूता है, वो पत्थर अपने आप दूर खिसक जाता है। पत्थर दूर खिसकते ही गुफा का सारा खजाना साफ साफ दिखाई देता है। खजाना देखकर तीनों डाकू तो पागल ही हो जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, इतना सारा खजाना है। आखिरकार ये सोना हमारे हाथ लग ही गया। अब तो हम ही इस सारे खजाने को उठाकर ले जाएंगे। डाकू के इतने बोलते ही गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तीनों दुष्ट डाकू उसी गुफा के अंदर फंस जाते हैं और प्रकाश अपनी उस सोने की पोटली को उठाता है और वहां से भाग जाता है। और वो डाकू तीन के तीन अंदर ही उस गुफा के दम घुट के मर गए।